room, and he was very angry. Okay, he said like if no one is coming inside, should you leave? I mean, there was Professor Ram was in my panel. Okay, Professor Ram was there, and that. So my IIM Kozhikode interview was in Bangalore, in the ITC hotel, Welcome Hotel, ITC Welcome Hotel जो होता है आपके बैंगलोर में, सेम एज IIM लखनऊ वन. तो दोनों का प्रोसेस एकदम सेम था. दे वर एक्सट्रीमली आइडेंटिकल टू ईच अदर. एंड थर्ड को मेरा IIM लखनऊ था, फोर्थ को मेरा IIM कोझिकोड था. एंड सो ऑल द प्रोसेस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एंट्री प्रोसेस, जो कैसे ढूंढना है वो सब वगैरह. If you want to know them, you can check out the IIM Lucknow video. I'll not go over them again. I'll just directly jump to the WAT and PI. So क्या हुआ था, my reporting time was 1:30 PM and I was very late to the venue. Okay, I was around 45 minutes late. 45 minutes late कौन होता है भाई, ठीक है. तो मैं वहाँ पे पहुँचा, बेंगलुरु का ट्रैफिक तो पता ही है आपको. तो वहाँ पे पहुँचा, तो फॉर्चुनेटली the document verification was still going on. तो I went inside the hall and I sat down. तो मेरा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तब नहीं हुआ क्योंकि बहुत लेट पहुंचा मैं, और मेरे पहुंचने के अराउंड 10 मिनट्स बाद ही वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पॉज कर दिया WAT के लिए. सो देन प्रोफेसर राम, द लेजेंडरी प्रोफेसर राम, यू शुड नो हिम, ही केम इनसाइड and he gave instructions for the WAT and we were handed over one piece of paper. The WAT topic was written there. So unlike IIM लखनऊ, क्या हुआ था IIM लखनऊ में, जो मैं अब अगर वो वीडियो देखे आपने कि वहाँ पे जो द कैंडिडेट्स दे वर सेग्रीगेटेड इनटू 7 panels in IIM लखनऊ, and each of the panels they were given different WAT topics. But in IIM Kozhikode, all the candidates who were sitting in the document verification hall, they were given the same WAT topic. So our WAT topic was employee loyalty is an outdated concept, outdated philosophy in modern era. So I argued for the house. I agreed that this is an outdated philosophy, because at the end of the day, the employees should be aware of the company's values. If the company values their employees as a person, as a human beings, and not just an asset, then the employees should also be loyal. But if not, if the company sees them as just a resource, then and if the employees they get better offer somewhere else, a better lifestyle, better salary, then obviously they should leave the company. Because this most of the time this happens in the private companies. In the private companies, the entrepreneur, if he or she wants, they can give better lifestyle, better salary to the employees. But once the companies go public, they reek of investors, shareholders. They try to maximize the profit, and eventually the employees, they are the medium of resource extraction, and they treated as assets. So that's it, whatever, like जो भी मैंने लिख दिया वहाँ पे करके, तो ठीक ठाक ही लिखा था मैंने. And then once our WAT was done, the people whose documents are verified, they went to their respective panels after having some lunch or whatever snacks was there. And क्योंकि मेरा नहीं हुआ था और बाकी कुछ लोगों का भी नहीं हुआ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सो वी स्टेड बैक एंड वी गॉट आवर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड. तो यहाँ पे ना मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है कि, तो मेरे को ये पता था कि once you get your documents verified, you can go there whenever you want, for the PI, because let's say your sequence number for the panel is 1. Okay, you are the first one. If you don't go, the panel will call the second person and you will be circulated back at the end. So it's fine. But मेरा क्या हुआ था, मेरा और जो बाकी लोगों का, तो once we got our documents verified, I thought okay fine, I'll go, I'll have some lunch or whatever, then I'll go. But once I got my documents verified, the document verified, he sent one message to the panels. Okay, this guy's documents are verified, he'll come in 5 to 10 minutes. And he did tell me that like you have to go directly. He said okay fine, you go whenever you want. And the second thing was that my sequence at the last, like I was the last guy in the panel. The other guys, they are already done their interviews. तो मैं वहाँ पे निकल के मैं बाथरूम गया, फिर स्नैक्स वगैरह लिया, कुछ लोगों से बातें किया अराउंड 20 minutes तक. So after 20 minutes I went there for the interview, and there were 4 rooms, 4 panels, and it was pretty empty, the corridor, because most of the people got their interviews done. And I sat down, and one girl was sitting next to me. I asked her like is the room, like where my panel was, is the room empty, or if someone is
are already inside. I mean, their interview is going on, and she said, yeah, someone is inside. Okay, then I sat down, and after around 10 minutes I sat down, and then one panelist came out of my panel room, and he was very angry. Okay, he said like if no one is coming inside, should you leave? I mean, तो मैं ना थोड़ा नर्वस हो गया, तो मैं बोला कि सर माय नेम इज़ ध्रुव, आई एम इन दिस पैनल. देन ही सेड, तो आओ ना अंदर, कि बाहर क्यों बैठे हो, बहुत देर से वेट कर रहे हैं हम लोग. तो मैं चला गया अंदर. He said like there was Professor Ram was in my panel. Okay, Professor Ram was there, and the other professor. He said like Professor Ram said like, Dhruba, we are waiting for you like for half an hour. Multiple times I went outside to ask for you. You're not there. And I got scared and said, sir, like I asked one girl, the other candidate, she said like someone is already inside, their interview is going on. I said no, it's not, we're waiting for you for half an hour. Then I started apologizing like, okay, sorry sir, I didn't know this. And they realized, okay, this guy is getting nervous, getting scared. I said okay, fine, sit down, no problem. Then I was out to sit down only, मैं बैठा मेरी नहीं ठीक से. भाई मेरे को प्रोफेसर राम बोल रहे हैं कि तो सो ध्रुव ज्योति, what are the drawbacks of our education system. मैं बैठा भी नहीं ठीक से, ठीक है. तो मैं ओके सर. तो मैं बोला कि सर इन इंडिया, सिंस इंडिया इज़ अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, वी नीड मोर जॉब्स, एंड सो वी शुड प्रायोरिटाइज द specific degrees, specific skill based degrees rather than general degrees, you know. तो ताकि मतलब skill based degree अगर हो तो उससे जॉब मतलब स्किल इम्प्रूवमेंट होता है, और अल्टीमेटली आपका जॉब में लोग चाहते हैं. तो दैट वाज द फर्स्ट थिंग आई सेड, कि वी शुड फोकस ऑन इंडस्ट्री बेस्ड एंड स्पेसिफिक स्किल बेस्ड डिग्रीज. एंड तो उसके बाद तो उन्होंने बोला ठीक है चलो. एंड दिस ही सेड लाइक, देन प्रोफेसर राम ओनली ही आस्क्ड like so ध्रुव ज्योति, what are social entrepreneurs. तो मैं बोला सर like social entrepreneurship is a practice where the entrepreneurs they focus on societal impacts, long term impacts rather than maximizing their profits and everything. I mean वो सेल के basically सोसाइटी का भला चाहते हैं. Then Professor Ram said no, there are lots of businesses, other businesses, all the businesses they try to have a social impact, they try to do good for the society. तो यहाँ पे उनको ये बोलते बोलते शायद रियलाइज़ हुआ कि नहीं, सब बिज़नेस नहीं चाहते हैं, वो ज़्यादातर बिज़नेस चाहते हैं कि उनके प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो. तो वो बोलते बोलते रुक गया. चल ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन ही आस्क्ड मी इज़ दैट, ओके हाँ, प्रोफेसर राम ओनली, सो ध्रुव ज्योति, व्हाई डू यू वांट टू डू द MBA आफ्टर फिजिक्स. क्योंकि मेरा फिजिक्स से मतलब डिग्री है मेरा. आई टोल्ड द मोटिवेशंस, वॉट एवर माई मोटिवेशंस आर, एंड द रीज़न आई एम कमिंग टू मैनेजमेंट लिविंग फिजिक्स. तो मैंने ऑनेस्टली बताया कि मतलब ऐसे कि जेमिनी टाइप मैंने आंसर नहीं दिया कि रट के नहीं आया. मैंने जो अपना सच का मोटिवेशन से, रीज़न से, वो मैंने बताया. फिर वहाँ उन्होंने कुछ काउंटर क्वेश्चंस भी किया. तो अपन ने अराउंड 3 to 4 minutes वो डिस्कस्ड ऑन दैट एंड दे वर चिल. ओके, बंदा सही बोल रहा है, मतलब ऑनेस्टली बोल रहा है, तो ठीक है. उस पर ज़्यादा ड्रिल नहीं किया उसके बाद. देन नेक्स्ट ही आस्क्ड मी, प्रोफेसर राम ओनली, सो ध्रुव टेल मी द टॉप 3 एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया. तो मैंने तो पहला नाम बोला कि अलख पांडे का, जो फिजिक्स वाला का फाउंडर है. तो उन्होंने पूछा कि क्यों, वाई डू थिंक इज़ द वन ऑफ द टॉप एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया. तो मैंने बोला कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ही मेड देम एक्सेसिबल टू द poor and lower middle class communities. Before what used to happen is that the students from rich economic background, then upper middle class people, they could only access the top class education for different competitive exams like JEE Advanced, JEE Mains, NEET. But he made this accessible to the poor and lower middle class people. So I think it's very impactful. So that's why I think he is one of the top entrepreneurs. Then he said like, okay, who else, और कौन है, और एक और नाम बताओ entrepreneur. तो मैंने बोला मेरे को दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था तभी, ठीक है. अभी तो पता है, अभी उस टाइम पे मेरे को दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था. तो मैंने ना अमन गुप्ता बोल दिया, वो शार्क टैंक वाला. तो उनको अच्छा नहीं लगा ये प्रोफेसर राम को, ठीक है. ये लाइक ही सेड लाइक, व्हाई डू यू थिंक इज वन ऑफ द बेस्ट एंटरप्रेन्योर्स आउट देयर इन इंडिया. ऐसा लाइक, तो मेरे को पता नहीं उस बंदे के बारे में कुछ भी, मतलब बंदे ने क्या बिज़नेस किया.
तो मैंने बोल दिया, तो मैंने जेनरिक आंसर दिया कि सर व्हेन ही स्टार्टेड देयर आर लॉट्स ऑफ अदर स्मॉल कंपनीज competitors, but he differentiated himself like his company. And then he said like, no, I mean, not so much. He manufactures all his things in China. Then I said like, sir, his marketing is very good. Okay, क्योंकि मैंने वो कुछ एड्स देखा था बोट का, जो हार्दिक पांड्या वाला जो होता है ना, तो मैंने बोला कि सर हिज मार्केटिंग इज़ वेरी गुड. तो मैंने बहुत ख़राब जवाब दिया इसका, मतलब मुझे पता नहीं था सर ऑनेस्टली. तो उन्होंने भी ज़्यादा उसके बारे में कुछ नहीं पूछा. तो उसके बाद ही मूव्ड ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ही आस्क्ड मी लाइक, ओके ध्रुव ज्योति, लेट्स से यू हैव टू मेक लिस्ट ऑफ टॉप 50 कंपनीज ऑफ इंडिया. देन व्हाट आर द पैरामीटर्स, हाउ विल यू मेक दैट लिस्ट. तो मेरे को ना ये सवाल, तो मैं आपको बोल दे रहा हूँ कि ये सवाल और जो पिछला सवाल था, इसलिए मेरे से इसलिए पूछा है क्योंकि मैंने जो मोटिवेशन मेरे से पूछा था वाई MBA वाला, तो मैंने बोला था कि आई एम इंटरेस्टेड इन, आई वांट टू परस्यू एंटरप्रेन्योरशिप एंड ऑल्सो आई एम इंटरेस्टेड इन फाइनेंस, इसलिए मेरे को ये सब पूछा गया. ठीक है. तो मैंने 30 सेकंड्स लिया, लिस्टेड डाउन द पैरामीटर्स लाइक हाउ विल आई इवेलुएट देम फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एन इन्वेस्टर. ओके. Then I told them some parameters like different financial ratios and different factors, quantitative analysis and all. तो उसके अगेंस्ट मेरे से सवाल पूछा गया कि जैसे मैंने कि EBITDA मार्जिन, ICR, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, वो सब डिफरेंट लेवरेज रेशियो, फाइनेंशियल रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ये सब जिक्र किया. तो उनसे मेरे को सवाल पूछा गया, काउंटर क्वेश्चन जो होता है. The other professor, he asked me these questions like, so what is EBITDA margin, what is ICR, what is asset turnover, and then can ICR, the interest coverage ratio, can this be lower than 1, and what does that mean. तो मैंने ये सब बोला. उसका मैंने ठीक से जवाब दिया क्योंकि मैं पढ़ के गया था फाइनेंस, क्योंकि मेरे को बोलना था आई हैव इंटरेस्ट इन फाइनेंस, सो आई रेड देम प्रीटी गुड. एंड देन प्रोफेसर राम asked me some 3 physics questions from my academics, and the first question was, so what is sublimation and why does it occur. तो मैंने तो बोला कि मैंने तो फिजिक्स आंसर दिया एकदम ही अच्छे से, ट्रिपल पॉइंट प्रेशर, इंटरमोलिकुलर एनर्जी, बट दे नीडेड वन लेमन लैंग्वेज आंसर. ओके. तो मैंने भी फिर से डम डाउन करके बोला, तो उनको अच्छा नहीं लगा, बल्कि और भी मतलब और भी डम डाउन करो, और भी सिंप्लीफाई करो. तो मैंने बोला ठीक है. देन दे said like, let's move on to the next question. Then the next question they asked me is that like, why total internal reflection it happens in optical fibers but not in plastic. तो मैंने इसका भी जवाब दिया, ये उनको ठीक लगा. So the next question he asked me was that, तो हम लोग सिलिका की यूज़ करते हैं सेमीकंडक्टर्स में. तो मैंने वो सब बोला कि बैंड गैप वगैरह बहुत कम होता है इसलिए. तो देन one counter question was that, then how can we make semiconductors insulators. फिर मैंने बोला कि टेम्परेचर बहुत कम कर देंगे तो थर्मल जो वेलोसिटी वो रहता है वो बहुत कम हो जाएगा, जो भी है मतलब. तो अगर हम इसको 0 केल्विन पे लेके जाए तो एकदम परफेक्ट इंसुलेटर बन जाएगा, जो भी. तो इनको वो अच्छा लगा. तो उसके बाद देन प्रोफेसर राम started going through my documents, the document file, and the other professor was sitting there. He started asking me questions. तो उन्होंने मेरे को पूछा कि so ध्रुव ज्योति, what are the social differences, social factors which are different in West Bengal, because I'm from West Bengal, and Karnataka because my college IISc was in Karnataka. तो मैंने थोड़ा 30 सेकेंड्स लिया, मैंने जॉट डाउन किया क्या क्या डिफरेंस होता है. And then I asked him, like, sir, can I be open? I mean, can I be politically sensitive, ethically sensitive, and morally sensitive? And he said, yes, you can be open. तो मैंने वो सब जवाब दिया, बोला वो सब, उनको अच्छा लगा. ठीक है. तो इस पे अपन ने अराउंड 5 to 7 minutes इस पे डिस्कस किया. Then that professor only he asked me, so Dhruba Jyoti, what is the GDP of West Bengal? तो मेरे को पता नहीं था ये. तो मैं बोला कि नहीं, आई डोंट नो सर. एंड देन ही आस्क्ड मी लाइक, व्हाट इज़ द GDP ऑफ इंडिया. तो मैंने बोला सर, अकॉर्डिंग टू द लास्ट फाइनेंशियल ईयर it is around $3.8 trillion. Then he asked me like, so what is the financial year, and then I said like, मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि ये होता है नहीं होता है. Then he said like, so what are the other type of years that you know. Then मैंने बोला कि ये सर जैसे हो गया, फाइनेंशियल ईयर हो गया, एकेडमिक ईयर हो गया, नॉर्मल कैलेंडर ईयर हो गया.
तो इसके बाद तो उन्होंने बोला कि इस ध्रुवज्योति दैट विल बी ऑल, प्लीज़ कलेक्ट योर डॉक्यूमेंट्स एंड यू मे लीव। तो मेरा तो इंटरव्यू हो गया यहाँ पे। तो द इंटरव्यू वॉज अराउंड 15 to 17 मिनट्स, इट वॉज नॉट वेरी लॉन्ग, नॉट वेरी शॉर्ट। एंड सवाल ज़्यादा पूछा नहीं गया मेरे से, पर जो भी सवाल पूछा गया उस पर ही अपन ने ज़्यादा वी डिस्कस्ड, आई मीन ही आस्क्ड मी काउंटर क्वेश्चंस, आई गिव काउंटर एग्जांपल्स एंड ऑल। तो यही है, जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम वाज स्पेंड ऑन दैट फाइनेंस क्वेश्चंस एंड ऑन द दैट सोशल डिफेंसेस क्वेश्चन दैट ही आस्क्ड मी। तो इस पे ज़्यादा सवाल पूछा गया, मतलब ज़्यादा टाइम स्पेंड किया गया। तो इंटरव्यू वाज ओके, आई रेट इट ओके, गुड ओनली, फाइन। एंड it was better than IIM Lucknow interview, because IIM Lucknow interview is a lot of questions, okay, like it's very long interview. I mean, you can check out the video. And so that's it, I guess. So I didn't get the result yet. I mean, it's only February now. I'll probably I'll tell in the comments if I got in or not. And so that's it, I guess. If you want any clarifications regarding any questions or anything, you can ask me in the comments. So yep.